Yash, can you hear me? Gaurav, can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? Yeah, we can hear you. Okay, I'm just checking with our students. Yash, आवाज आ रही है? गौरव, आवाज आ रही है? Shreyansh, are you there? Shreyansh? Hi everyone, can you hear us? चिराग, आवाज आ रही है? Can you hear me? Yes, sir. Okay, great. आप कहाँ पर हैं? पुणे में हैं? कहाँ पर हो आप? मैं अभी पुणे में ही हूँ। पुणे में हो, very good. आप काय की पढ़ाई कर रहे हैं अभी? Pursuing 12th at CA Foundation. Sorry, 12th? 12th HSC board with CA Foundation. CA Foundation. Okay, great. Oh, CA Foundation, very good. Chirag, good. Hi, welcome Shreyansh. Hi. Hi, Shreyansh. आवाज आ रही है या आप म्यूट पर हैं? किशोर, आवाज आ रही है? आ रही आवाज, एकदम क्लियर आवाज आ रही। हाँ, आप किशोर, आप काय में क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मेरी पढ़ाई हो गई है जी। मैं बहुत दिन से जैनिज्म जो चल रहा लोनावाला में प्रोजेक्ट, उसका मैं काफी दिन से मुझे इंतजार है। काय का? जो लोनावाला में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैनिज्म का। हाँ हाँ हाँ। वो मैं काफी साल पहले जुड़ा हुआ था ये प्रोजेक्ट में। जब वो वैभव श्री जी महाराज साहब देख रहे थे कुछ तभी। राइट। तो मेरा बेटा फिरोदिया हॉस्टल में है। Oh, I see. यश छागेड़। Yes, Yash is on. हाँ, तो यश Very को nice. यश ने मुझे बताया था कि पापा बोले आप मेरे को एक बार बोले थे, बोले कि लोनावाला में बहुत अच्छा जैनिज्म का एक बन रहा बोले। तो उसने मेरे को ये लिंक भेजा और मैं ज्वाइन हो गया सर। Great, thank you so much joining. हाँ, यश, आपको हमारी आवाज आ रही है? Yes sir. हाँ, यश, आप काय की पढ़ाई कर रहे हैं? Civil engineering sir, B.Tech civil. B.Tech, okay. तो welcome everyone, नमस्ते, जय जिनेन। जय जिनेन। मैं बस सबसे आस करूंगा आप अपन इंट्रोडक्शन से शुरू करें। दिस इज वेरी इनफॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन है कि अपन जैन धर्म क्या है, कैसे अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में है। सो वेलकम एवरीवन। गौरव, so maybe Ritika, we can start off with Namokar mantra. Yes. Would you like to just do Namokar mantra, everyone? If just take a minute, अपन नमोकार मंत्र से शुरू करते हैं और फिर अपन बातचीत करते हैं। Just a second. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुणं, ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनासनो, मंगलाड़ं च सव्वेसिं परमं होवै मंगलम। Great. Om Shanti. Okay. So maybe अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते। श्रेयांश, आप कहाँ पे हैं? Hello sir, Jai Jain sir.
Sir, I am from the Fairview Hostel, sir. I am हाँ. currently pursuing computer science engineering at MIT WPU, sir. Oh, wonderful. And- कौन से साल में हो आप? Sir, I am in 3rd year, sir. Okay, very good. All right. और यश आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? Sir, I am studying BTech Civil from MIT WPU. Okay. और कौन से ईयर में हो? 2nd year, sir. Very nice, very nice. और गौरव आप क्या कर रहे हैं? Jain sir, I'm currently Jain. pursuing 12th with my CA foundation course. Excellent. Okay. Very good, very good. और किशोर जी आपसे बातें कर लिए. I think चिराग आप क्या कर रहे हैं अब? हेलो चिराग, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है सर। हाँ. आप बता रहे थे आप क्या कर रहे हैं? 12th और सीए फाउंडेशन। Okay, great. Or I think Herschel is also joining. And Bhavin is also joining. अपन करेंगे. So welcome everyone. I want to also have Vitika Barjatia, who's here also to welcome everyone. Vitika, aap apna introduction and welcome, and then we'll have Herschel and Bhavin also give an introduction. Jai Janendra, everyone. My name is Vithika Bajatya, and I'm working with Jain Path and with Manoj sir. So, मैं और मनोज सर हम दोनों मिलके आपको थोड़ा सा जैन पाथ के बारे में आगे बताएंगे, कैसे क्या हम क्यों जैन पाथ में आगे बढ़ रहे हैं. So first, सबसे पहले हम सबसे अपन इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कौन कहाँ है, कैसे हैं, so that we can have a better understanding for each other. Great. I think एक दो और रह गए. भाविन, आप introduction करेंगे? Sorry, sir. Can I ask something, sir? Yeah, Please, sure. please. Yeah. So Jain Path is basically an organization or simply Jain Path, like we are following Jain Path. No, Like, it's a concept. It's हम बताएंगे. It's just a concept of thinking about Jainism. okay. And Jain way of life. There's no organization. It is sponsored by the Jaina's Long Range Planning Committee. Jaina is the organization in North America. जो अमेरिका में organization है जो जैन धर्म को आगे बढ़ाता है. Yeah, definitely. Okay, thank you. I'm the chairman for the Jaina's Long Range Planning Committee. Okay. So we are sharing our learnings with young people. Amazing, sir. और we are हम आपका actually ये pilot है. आपका views, आपके thoughts इसके बारे में चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं. तो okay, Bhavin, quick introduction. आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? Go ahead, you have to unmute Bhavin and Herschel. Go ahead. Maybe Herschel, can you give a quick introduction? I think you're on mute, Bhavin and Herschel. Okay. When you get a chance, you can just come in between and share. Okay. So this is an interactive session. Jai Jain everyone. मेरा नाम डॉक्टर मनोज जैन है. मैं एक इन्फेक्शन का डॉक्टर हूँ in USA, originally from Indore, from Madhya Pradesh, and been in America for many years and working on ways of how to talk about Jain Dharma to young people, to young audience. तो इसलिए हम आपका opinion, आपके thoughts, ideas चाहते हैं. So let us, ये आपकी hostel है? Shriyansh, is this your hostel? Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm going to ask you guys a question. हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको आंसर करना है आप करो. अगर if an alien
You know what an alien is? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, if an alien lands on Firodia hostel campus, वो आपसे पूछता है कि what are your principles? What is your religion? What will you say? क्या बोलोगे आप? So basically, we follow Jainism, and our core Mhm. principles are ahimsa, anikantvad, and aparigraha. 3 A's of Jainism. Oh, very good. Great. आपने श्रेयांश वो कहाँ से सीखा? Basically, sir, I also run a small youth organization here. It is based in India, and we present Jainism in like scientific and more way. So that from there I learn all these things. Oh, very nice. Okay. Other people, और क्या बोलोगे आप? संभव, अगर आपसे कोई पूछे कि what are your principles? क्या beliefs हैं आपके? आप क्या बोलोगे? अहिंसा परमो धर्म. हाँ, Right, so great. even तीनों में से अहिंसा is the major one. Excellent. Okay, किशोर, आप क्या बोलोगे? सर मैं तो अहिंसा परमो धर्म का बहुत फॉलोअर हूँ और हाँ, और मैं जैनिज्म में फॉलो करना एक मेरा शौक है। ठीक है। तो और आपका काम भी है वो, you enjoy that. Okay, गौरव मैं और एक यहाँ पे एक हमारे मंदिर में मैं 12 साल से ट्रस्टी भी हूँ जैन मंदिर ठीक में। है, excellent, very good. और गौरव आपका क्या बोलोगे? आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं? Go ahead. हाँ, आवाज बोलो। हाँ गौरव, हेलो। हाँ, और चिराग, आप what will you say? I think they are, yeah. Okay, so you might be in mute. Okay, so ये चीज अपन बोलते हैं कि ये क्या है कि एक elevator speech है। तो वितिका, very quickly, what is an elevator speech and what is all of this? See, हम जैनिज्म को एज अ रिलीजन फॉलो करें या एज अ वे ऑफ लाइफ, ये हम पर है। एक्चुअली देखा जाए, बहुत सालों से बहुत सारी चीजें सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल में है, और वो जैनिज्म शुरू से हमें बताता चला आ रहा है। That is what Jainism is. Not only a religion, it is a way of life. मतलब we are practicing vegetarianism, we are practicing क्षमा, forgiveness, we are practicing meditation. हम करुणा भाव रखते हैं, हमको environment के बारे में सोचना है। These all things, ये जो शुरू से चली आ रही है, यही जैनिज्म भी सिखा रहा है, और यही चीजें आज हर कोई इसी चीज के बारे में बात कर रहा है। That is what Jainism is all about. Here हम मेन 3 कोर प्रिंसिपल्स, जैसे कि श्रेयांश ने कहा था, नॉन वायलेंस, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, नॉन पॉजिटिवनेस, ऑल 3 A's एग्जैक्टली, अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपरिग्रह. These are the 3 principles on which Jainism actually work. So हमारी प्रैक्टिसेस भी यही कहती हैं। जैनिज्म हमको इसी तरह से प्रिंसिपल्स के बाद वो प्रैक्टिसेस यानी जो डेली हमको जो करना चाहिए वो भी सिखा रहा है। गुस्सा मत करो, ईगो मत रखो, किसी से द्वेष मत करो। दीज आर ऑल थिंग्स जो लोग सब एक, आप मेडिटेशन करने जाते हो या कहीं भी किसी भी फॉलोअर को सुनते हैं, so जैनिज्म भी यही सिखाता है कि yes, you have to do all these things from the day one. So this is what the basic practices which we have to do. Great. So और श्रेयांश से पूछा कि जैन path क्या है, तो मुझे very simple आपसे शेयर करना है कि Jain path is a way of looking at Jainism, and I want to welcome, I think also someone else joined, but yeah. So okay, so Jain path क्या है? ये is a way of thinking about our religion. अपन को शुरू करना है thought process कि एक जैन धर्म में philosophy है, philosophy से principles. आपने ऑलरेडी 3 प्रिंसिपल्स बता दिए श्रेयांश, अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह। फिर उनसे प्रिंसिपल से प्रैक्टिसेस आती है, यू लर्न अबाउट दोज प्रैक्टिसेस, एंड सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र हेल्प्स अस। और अपना अल्टीमेट गोल क्या है?
ठीक है मोक्ष है, but equanimity, क्षमता भाव रखना, happiness also. So what Jain path is a way of us looking in a modern sense. So Vitika, can you share very quickly कि what do we talk about Jain philosophy में क्या क्या आता है? जैन फिलोसफी में बेसिकली हमारी 3-4 थ्योरीज आती हैं. थ्योरीज कौन कौन सी? थ्योरी ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ सोल, हमारी लाइफ के ऊपर थ्योरी ऑफ सोल, आत्मा के ऊपर, थ्योरी ऑफ कर्म, हमारे कर्म कैसे बनते हैं उसके ऊपर, और थ्योरी ऑफ मोक्ष, किस तरह से मोक्ष के लिए हम लोग स्ट्राइव करते हैं. Right. And then that leads to the three principles. Jain and then practices. the practices. Yes. ठीक है. Let's go into more detail on this. And how is this different? I'm just one quick slide. अगर अपन traditionally बातें करते हैं कि ये द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, these are traditional ways of looking at it. अगर अपन modern language में इसको explain करेंगे, theory of life is all of this. Biology, chemistry, same thing. जीव अजीव तत्वास क्या है? Theory of soul, no different. Karma, theory of karma and theory of moksha. Same way, ahimsa, anekantvada, parigraha, apne anuvrat se aate hain. Same thing, practices are related to the traditional and modern. Okay, let us spend a few minutes. Any questions or comments? Shriyansh, kya sochte ho aapko? Do you see now what is Jain path? Aap mute hai. Okay, you see what so Jain path is. Now let us go into more details. And I'll ask Gaurav and Chirag, agar koi questions ho, please feel free to ask questions. Please. Yeah, theory of life kya hai and soul kya hai, yeah, let's go into more detail. Triple A's, where does all of this come from? It comes from Tattva Sutra. Sir, I just want to ask something or clarify something. Please. Yes. I just read one line from one of our agams. I don't remember what's the name of that agam precisely, but the line is that Jainism is a Hindi. Jainism is a what we say philosophy in Hindi. Darshan. Yeah, Jainism is a darshan. No. Yeah. Jainism is a darshan and a dharam also. So in our agam also it is written that it is a philosophy and dharam also. Yes, it is a philosophy, exactly. Yeah. And a way of life. And a way of. Exactly. So now, so just so give you an idea, तो अपन बोलते हैं ट्रिपल एज सब कहाँ से आते हैं? ये तत्वा सूत्र से, अपने आगम से आते हैं, right? So very much so. We will go into detail on how that is derived as well. It comes from what different ahimsa की अलग-अलग practices होती हैं. We will go into some of these practices and discuss some of those as well. And then अपरिग्रह, sorry, अनेकांतवाद की भी practices हैं. अनेकांतवाद से क्या आता है? Respect, humility, scripture reading, prayers, puja. Sorry sir, please. To interrupt. Vitika ma'am, Leena ma'am is not able to join the meeting. So can you please guide her? Yeah, I have already sent her the link. Okay, fine, I'll look into it. She is asking me the password of. Okay. Did anyone else have problem joining in? No, sir. No. Okay. All right. Okay. So now these are practices for anekantvad, and these are practices for aparigrah. We will go into more detail. कि ये क्या है, अलग-अलग कैसे, how does aparigrah and art of dying, charity, environmentalism, how does that all relate? But where all of these come from is, ये सब कहाँ से आती है, is from Tattva Sutra. Okay, so I'm going to pause and ask a question from you guys. And we can go into this. What is the underlying principle that brings ahimsa
Anekantvad and aparigraha together. What do you see here? It is the one underlying principle. The equality between all the souls. Like in Jainism, everyone can be God. Yes, perfect. Chirag, do you see that? Chirag, let's just go ahead and unmute and do you see that? Equality of all the souls. Okay. Anekantvad is what then? Go ahead. Pluralism. Like if someone is slapping me, so Yeah. like if I slap someone, brother, so that thing is bad for that brother, but that thing is good for me. So Yeah. different perspectives that we can see. Yeah. So equality of Right. perspectives. We respect. We don't have to agree. Make sure you understand the difference. You respect others' perspective, but Anekantvad says you don't have to agree. And what is aparigraha? Minimalism. Yeah, that we all exactly. basic needs, equality of basic needs. So now you can see ki ahimsa, anekantvad, aparigraha has a deeper sense. It is equity. And equality or equity mein farak kya hai? Can you see the difference? Do you see the difference? Anyone would like to say? Kishore ji? Pardon, can you please repeat? Yeah, What is the equality. difference between equality and equity? Equity. What is Can you the see the difference? image? Can you Can see you the picture? Okay. What is the 1 minute. difference? 1 minute. Okay. Yeah. So Kishore, equality yeah. is like everyone is equal, but equity is like we can say na like I have like 10% equity in the company like that. So I think it is Well, no, more so that equity actually is, why is there are two boxes for this person? yeah. So he has one box and other one has two and other than three. Yes. So So because both are- there's fairness, justice for Yeah. all. So someone who needs more gets more. Someone who doesn't get. That is what equity means. Equity means Equality means giving the same thing same to thing everyone. to everyone. Yes. Yes. Okay. All right. Good. So now let us go in each of those three ahimsa, anekantvad, aparigraha and talk a little bit more. पर उसके पहले मुझे पूछना है किशोर जी, any questions or comments? Okay. And anyone else? Sambhav? Yes, sir, it's clear all. It's juicy. Okay. All right. So let us now go. Ahimsa ka matlab kya hota hai? So Vitika, can you explain what this tree is about? Yeah, sure. See, what exactly ahimsa means? Ahimsa ka matlab hai not harming anyone from man, vachan, kai, matlab by thought, speech or action. So this tree is not only not harming, but it is also helping. हम हमारे थॉट से, हमारी स्पीच से और हमारे एक्शन से किसी को हेल्प भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अहिंसा, एंड किसी को हार्म भी नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अहिंसा. So from this tree, it is very clear that by thoughts, we should not be revengeful, non-abusive, we should be vegetarianism. Action कहता है vegetarianism, speech कहता है non-abusive, thoughts कहते हैं non-revengeful. और helping, we should have compassion, forgiveness and empathy. तो कोई भी चीज जो हमारे सोच में भी नहीं आती है और हम किसी को सोचते हुए भी किसी को हार्म ना करे, दैट इज ऑल अहिंसा इज. तो अगर आपसे एलियन पूछेगा श्रेयांश कि ठीक है, आपने बोला अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, अहिंसा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? So I will explain him that protecting every life, like Yes. the life of and right. life of the invisible. So not yes. Right. So it is not harming. Yeah, not harming. Through your thought, speech, and action. And helping also. Helping thought, speech, and action. And examples are being non-revengeful, non-abusive, vegetarian, empathy, compassion, forgiveness. Yes. Do you see how simple it is
to now explain what is ahimsa. Yes, sir. Okay. And you know the story of the 6 hungry men in the mango tree? Does everyone know the story? Everyone is hungry. One says, I'm so hungry, I'm going to chop the tree down. One Okay. says, I'm so hungry, I'm going to ek mein branch tod dunga. One says, I'm going to pluck a mango. And another says, I'm just going to pick the mango at Yeah. the base. Yeah, that's what our Marasas do. Ah, Yeah, so that is the story of the mangoes. Okay. There is also the circle of ahimsa. Hi, welcome, Leena ji. Yeah, I think she is now joined in. Yeah. Leena ji, welcome. Can you hear us? She's just connecting with audio. Okay. All right. So this is the circle of ahimsa. अपन बोलते हैं अपन को अहिंसा करना है, अपन को नॉन वायलेंस करना है. तो मुझे ये आपसे पूछना है, आपको नॉन वायलेंस किसके टुवर्ड्स करना है? Who do you want to do non violence towards? Like towards every soul and Every towards soul. bad habits. Towards our Yes. inner self. Towards Sambhav, very good. Very Our inner good. self. Yes. Sambhav, तो ये बताओ कि अगर कोई पूछता है, अगर how do you do violence towards yourself? तो आप क्या बोलोगे? So how does one do violence towards oneself? आप बताएंगे किस तरह से आप violence करते हैं अपने आप से? Yes, sir. We does not maintain good principles of our life, Good. and Good. By thinking negative thoughts. Negative thoughts, stress, keeping Stress. stress, we hurt ourselves. By Right. having drugs and all that bad habits. Bad habits. Yes. So if you're smoking, you're hurting your body. Alcohol, you hurt. Drugs, you hurt. And so non-violence is actually begins with the self. Right? Non-violence आपके खुद के against नहीं करना है. Okay. Now let me ask, non-violence then extends. Vitika, what is this slide telling us? See, ये तो अभी समझ आया अपने को कि सबसे पहले द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि अगर हम अपने आप के साथ नॉन वायलेंस नहीं करेंगे तो हम दूसरे के बारे में सोच पाएंगे. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज अहिंसा टुवर्ड्स सेल्फ, मतलब अपना ध्यान सबसे पहले रखना है. उसके बाद अब कैसे रखेंगे? सबसे पहले हम लो स्ट्रेस लेके, योगा एंड मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, जब हम फिट एंड फाइन रहेंगे तब हम दूसरे के बारे में सोच पाएंगे. सो हियर कम्स आवर फर्स्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स. सबसे पहले उसके अपने के बाद फैमिली एंड फ्रेंड्स आते हैं जिनको हमें अपने केयर करनी चाहिए, उनको फॉरगिव करना सीखना चाहिए. देन कम्स एनिमीज. हमारे जो एनिमीज है उनको साथ भी हम उनको फॉरगिव कर सकते हैं कि ठीक है, हो गया उनसे कोई गलती अगर हुई होगी तो वो भी हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं. देन कम्स एनिमल्स. तो एनिमल्स के बारे उनके लिए थोड़ी एम्पैथी रख के, केयरिंग करके, उन पिटी रख के, उनको सर्विस करके, हेल्प करके हम एनिमल्स के लिए रख सकते हैं. देन इज एनवायरमेंट. हाउ टू टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट. अपना वेस्ट, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, चीजों को जितना रिसाइकल कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करके. सो ऑल दीज कम्स इन अहिंसा. सो इट्स अ सर्कल, इट्स अ बिग सर्कल टुवर्ड्स self, then family and friends, and then so on. But we're not there yet. Yeah. I can't forgive. I'm not able to forgive everyone. I'm not understanding. I'm not straightforward. So, Vitika, how do we transform? अगर मैं गुस्सा होता हूँ, मुझे hatred है, deceit है, अपन किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? See, हमारा धर्म हमें यही सिखाता है. Our Jainism tell us to be self-aware. कि पहले हमें खुद समझना चाहिए कि हमें इतना गुस्सा अगर आ रहा है तो क्यों आया, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से मुझे गुस्सा आया. फिर ये सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मैंने उसकी वजह से क्या किया. मैंने गुस्सा करके मैंने उसको मारा, मैंने उसको गाली दी, मैंने क्या किया उसके लिए. देन आई रियलाइज कि नहीं मैंने गलत किया, तो आई कैन अपोलोजाइज, आई कैन से सॉरी.
और मैं अपने मन में कोई भी ग्रज ना रखते हुए आई कैन रिकंसाइल एंड आई कैन फॉरगिव द पर्सन. दिस इज हाउ आवर जैनिज्म टीच अस कि यस यू कैन. सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होके हम अपने आप को अगर समझेंगे तो हम फॉरगिव करना सीख जाएंगे. Similarly, welcome Leena ji. Hello. Hello, sir. Hi. hello Leena ji, Jai Jai Jinendra. Yes. So we started and so we're talking about transformation. So Shriyansh, if I had to, मैं आपसे पूछूं, Yes, sir. अगर आपको hatred से understanding में जाना है, तो आप कैसे जानेंगे? तो क्या steps लेने पड़ेंगे आपको? So firstly, the easiest way is start doing samik. So Yes. Exactly. yeah, in that samik we can do like step by step. We can Yeah. firstly introspect like what are our faults and what we Yeah. say bad words to other or all that. Yeah. And then we can apply some solutions like we can recite some gathas so that Yeah. we can let's say Namointanam only. Namointanam is the biggest gatha of Jainism. So Yeah. we can recite Namointanam, we can do dhyan, we can do all that things. We can patch up with that person. Sure. And then we will be happy. So what other ways in addition we add is you criticize the action, not the person. अपन अगर आदमी पे या किसी पे इंडिविजुअल पे पूरा ब्लेम करते हैं तो क्या होता है कि you blame that person. You have to blame the action. So can I add something sir here? Please. So one quote I remember of Lord Mahavira that hate crime, don't hate criminal. Exactly. Exactly. That's what. Yes. Exactly. Right? वही चीज लिखी है. Criticize the action, not Actions, the person. not the person. और गांधी जी ने भी यही चीज ली. देखो ये सब चीजें जो अपन बोल रहे हैं, जो मार्टिन लूथर किंग ने ली, जो गांधी जी ने ली, ये भगवान महावीर बहुत सालों से बता रहे हैं. एंड देन वर्क टू ओवरकम योर ओन इनसिक्योरिटीज. कई बार अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज होती है जिससे अपन को गुस्सा आता है. एंड देन रिकॉग्नाइज द हार्म, सीइंग अदर्स एंड कम टू अंडरस्टैंडिंग. इस तरह से अपन हेट्रेड को धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में लाते हैं. सेम थिंग डिसीट. इट ऑल बिगिंस विथ, वितिका आप बताएंगे डिसीट को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कैसे करते हैं? हम किसी को जब समझ नहीं पाते तो फर्स्ट वही बिकमिंग अवेयर ऑफ एक्शंस. दूसरे के व्यूज को सुनो, उसको समझो कि उसके अगर उस एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, उसमें हम विलिंगनेस टू चेंज द एटीट्यूड एंड देन वी विल बी फील रिलीव्ड इन नॉट लाइंग. अगर हम सामने वाले को झूठ नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा बोल देंगे कि हमें कोई काम नहीं करना है, तो उसके लिए इतना सारा घुमा फिरा के ना करते हुए हम डायरेक्टली उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे. उसको एक हैबिट बनाएंगे कि सही बोलने का. दैट इज व्हाट सबसे पहले यही है, सेल्फ अवेयरनेस. अपने एक्शंस को के ऊपर अवेयर करना है, फिर उनको चेंज करने की कोशिश करना है कि दूसरे ने अगर कुछ किया तो क्यों किया, एंड देन वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली से दैट थिंग. किशोर जी, एनी थॉट्स? आपकी कोई थॉट्स और आइडियाज कि इस तरह से अपन सोचे कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? You have to unmute. अनम्यूट करना पड़ेगा उसको. हाँ किशोर जी. म्यूट. Okay, until he comes unmute. Leena ji, any thoughts on this idea of how to transform? एक्चुअली वही फॉरगिवनेस सबसे बड़ी बात है. क्षमा, जो क्षमा वीरस्य भूषणम अपने में बोलते हैं, इस हिसाब से ही वो करना चाहिए. अपने यहाँ मतलब जैनिज्म में अनेकांतवाद दिया हुआ है कि दूसरों की भी सुनो, उनके भी कुछ व्यूज है. जैसे महावीर भगवान ने कहा है 100% सत्य कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. हर एक की नजरिए से हमको देखना चाहिए. अलग अलग व्यूज रहते हैं उसमें, तो अलग अलग व्यूज से हमको सोचना चाहिए. Great. And welcome to Anand. Anand, welcome. Yeah, Anand Raka. Can you hear us, Anand? Okay. So अहिंसा के बारे में बातें कर ली अपन ने. अब अनेकांतवाद के बारे में अपन बातें करते हैं कि अनेकांतवाद क्या है. So Vitika, ये what are these different views? Can you explain us what are different views and how does one look at it? Yeah, Anand, can you hear us?
अनेकांतवाद का एक्चुअल मीनिंग ही यही है कि सबके व्यूज को रिस्पेक्ट करना। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूटिस्ट व्यू। हम जो मैंने कहा है वही सही है, इधर यस और नो, सिर्फ अगर यही दो चीजें हैं, दैट इज व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट व्यू, कि मैं ही सही हूं, बाकी मुझे कोई और सही, या तो हम ऐसा व्यू रख सकते हैं। अदरवाइज टॉलरेंट व्यू, आई डू नॉट एग्री ऑन व्हाट, मैंने, मेरा जो व्यू है वो सही है, लेकिन हाँ ठीक है, दूसरे का व्यू को मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट टॉलरेंट व्यू इज। थर्ड इज डायलॉग व्यू, कि आई कैन कमेंट, ठीक है आपका व्यू अलग है, मेरा तो ये व्यू है, उसके ऊपर बहस करना, दैट इज व्हाट डायलॉग व्यू इज। देन कम्स इज ओपन माइंडेडनेस व्यूज, यानी कि ठीक है आपका भी एक व्यू है, मेरा भी एक व्यू है, तो अब उस व्यू को भी एक्सेप्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, वो होता है acceptance view. This is a continuum of views. And we should move. Now, again, Anekantvad doesn't mean that you agree with the other person, but you listen. Okay, this is a little difficult, so I'm going to slowly take you through this conversation. And Shreyansh, I want you to see if you can follow this and tell me if it makes sense. Suppose we make I, others, and अपना जो perspective, दिशा देखने का perspective है, we're going to put it in different. This is just ordinary. अगर अपन अनेकांतवाद की तरफ से देखते हैं तो ग्रीन में, रेड की एब्सोल्यूट की देखते हैं, और अपन क्या देख रहे हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ श्रेयांश कि ये क्या है, आधा ये कप भरा है या आधा खाली है, क्या बोलोगे आप? तो भरा है, बिकॉज पॉजिटिवनेस, व्हाट मेक्स अस, पॉजिटिवनेस से भरे बोलोगे आप। अब मैं देखो, ऑर्डिनरी व्यू होता है तो ठीक है, तो कोई वो भी दूसरे लोग बोलेंगे आधा भरा आधा, तो उसमें क्या होता है, अगर आप एक दिशा से देख रहे हो, दूसरा दूसरी एक और दिशा से देखता है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यू जस्ट नॉट थिंकिंग वेरी मच अबाउट इट। बट अगर दूसरा कोई एब्सोल्यूट कोई बोले कि आधा भरा हुआ है और आप बोलोगे कि आधा खाली है, तो अब मुझे ये बताओ क्या होगा? सर क्लैश होगा सर। क्लैश होगा। तो देख सकते हो कि अगर ये बोला आधा भरा आधा खाली, तो क्लैश होता है। एंड दैट इज द कॉज ऑफ ऑल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, पीपल हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अपन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अब मुझे ये बताओ, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे आप श्रेयांश? सो सर मैं तो यही कहूंगा कि सर आधा भरा भी हो सकता है या फिर आधा खाली है। हाँ, तो अनेकांतवादी बोलता है क्या कि ये आधा भरा हो सकता है और आधा खाली हो सकता है। और दूसरे का पर्सपेक्टिव कुछ भी हो, वो एब्सोल्यूटिस्ट हो, अनेकांतवादी हो, ऑर्डिनरी हो, अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो it leads to harmony, it leads to equanimity and happiness. Dialogue, respect, tolerance, open-mindedness, acceptance. आपने देखा कि बस आपकी दिशा ने पूरी चीज चेंज कर दी है, ये अनेकांतवाद होता है। संभव ये समझ में आया आपको? Yes sir, I got it. You got it? Do you see how you can explain कि अनेकांतवाद क्या है? लीना जी, आपने देखा, कैसा लगा आपको ये दिस डायग्राम? डज इट मेक सेंस? हाँ, अच्छा है, अच्छे से, मतलब इजीली समझ में आ रहा है वो। Yes. So it helps people to see कि what is अनेकांतवाद and how can one do it, right? We always think that we're always in conflict. अपन हर दफे कॉन्फ्लिक्ट में जरूरत नहीं है, कि अपना धर्म बताता है कि सॉल्यूशन है, there is a solution of how to reach that. Okay, all right, and we know the story. Does anyone know the story of the six elephants? Yes sir. Six blind men and the elephant. Yeah, right. So that is very important. Okay, now aparigrah kya hai? So it is the difference between needs and wants. Okay,
So let us discuss की needs and wants. Ritika, आप explain करेंगे कि needs क्या है और अपनी wants and greed क्या है? श्रांश, एक बात बताओ, तुम्हारे पास फोन कौन सा है? फोन आईफोन है? इससे बेटर फोन चाहिए? तो नहीं चाहिए मैम, है अभी। दैट मींस मतलब अगर नॉर्मल फोन होता तो भी तुम सेटिस्फाइड रह सकते थे, राइट? हाँ मैम, पर मेरी नीड्स ऐसी है कि मेरे को अभी ये चाहिए। So this is what exactly, see, every person, हर person की अपने हिसाब से अपनी एक लाइफस्टाइल है, अपना एक जेनेटिक्स है, अपना एक एरिया है, तो हर उसकी अपने एज के हिसाब से, कंफर्ट्स के हिसाब से उसकी नीड्स जनरेट होती हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी बेसिक नीड्स जो होती है, क्या होती है बेसिक नीड्स आपके, बताओ, जनरली बताओ। फूड, शेल्टर, क्लॉथ, घर, Yes. कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान एंड फूड, राइट? तो ये जो हमारा बेसिक नीड्स तो हम कर ही रहे हैं पूरी। हम इसके अलावा स्टडीज कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, नेसेसिटी है, मतलब आज के दिन ये जरूरी है, ये जरूरत है हमारी, राइट? बिना एजुकेशन, स्टडीज के अपन वी कैंट लिव अ कंफर्टेबल लाइफ और गुड लाइफ, अपन शास्त्री नहीं पढ़ सक पाएंगे। देन इज कंफर्ट्स, हमें थोड़े बहुत, तो अब ऑब्वियसली व्हेन यू आप पढ़ रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको थोड़े बहुत कंफर्ट्स भी चाहिए, दैट इज अगेन ओके। नाउ इज वांट्स, आप और पिक्चर देखने जाना है, और दीज आर ऑल योर वांट्स, बट इसके बाद मेरे पास सब कुछ है, आई एम स्टिल सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी मुझे और ज्वेलरी भी चाहिए, मुझे और ये भी चाहिए, मुझे पॉश कार चाहिए, दीज आर, ये सब क्या होता है? दिस इज ग्रीड, दिस इज व्हाट इज ग्रीड। उसके पास है इसलिए मुझे चाहिए, दिस इज ऑल जेलस एंड ग्रीड। तो हमें उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। अपरिग्रह हमें यही बताता है कि सबसे पहले हमें अपने नीड्स एंड वांट्स के बारे में समझना चाहिए, धीरे धीरे, एंड देन अदरवाइज हम अब क्या करते हैं उससे, हम झूठ बोलना सीखते हैं, वी चोरी करना सीखते हैं, वायलेंस करना सीखते हैं, अगर हमारी ग्रीड पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अपरिग्रहण चीजों को छोड़ना, मोह को छोड़ना चीजों से। Right. Questions? I know a couple of people have joined in. Sambhav, questions? Okay. Now let's go deeper. Okay. Now it is, why do we have particular attachments, and how do we get to know attachments? So Vitika, ये बताइए कि ये अलग अलग तरह की, what are we attached to? अपना परिग्रह is due to attachment. The underlying problem is attachment. Right. What are we attached to? अपनी आत्मा है, what are we attached to? बहुत सारे अलग अलग उस पे टाइम्स पे हम अलग अलग चीजों से अटैच रहते हैं, लाइक वी अटैच टू द ब्यूटी, वी अटैच, यंग एज में हमको क्या लगता है कि हम अच्छे दिखने चाहिए, हमारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ, मेल्स के लिए लगता है, गर्ल्स को लगता है कि वी शुड बी ब्यूटीफुल, वी शुड हैव, मतलब अच्छा सब कुछ अच्छे तैयार होना चाहिए नॉल, बट मेल्स के लिए लगता है फिजिकल स्ट्रेंथ उनके पास अच्छी होनी चाहिए। तो हमारी बॉडी, हमारी सोल उन सब चीजों से अटैच रहती है। What is attached to mind's emotion? गुस्सा, प्यार, मतलब दूसरों से एंगर, ईगो, कि यार नहीं उसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, all these things, these are so attached to mind. Then is attached soul, attached to others. Others में families obviously there, friends होते हैं, enemies होती हैं, हम इन सब से attached होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। Then is the material. Material means पैसा, फूड, क्लोथ्स, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, आई वांट टू ईट दिस, आई वांट टू बाय दिस, मुझे ये टेक्नोलॉजी, मुझे आईपैड भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए। सो मटेरियली मेरी सोल कितनी सारी चीजों से अलग अलग अटैच्ड हो गई है, इमोशनली, बॉडी भी, फिजिकली, मेंटली, हर चीज से हम अटैच्ड हैं। Great. So now we have talked about the three, ahimsa, anekantvad, and aparigraha, and looked at the different types in detail. So basically we looked at ahimsa is not harming or helping, and ahimsa towards the self and towards others, and how we can transform.
अनेकांतवाद, having different views, अपन को views कैसे करने हैं, absolutist view and ordinary view, conflict कैसे कम कर सकते हैं, and अपरिग्रह। तो आपने जो श्रेयांश बोला था कि कोई एलियन आएगा और आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो क्या ये डायग्राम्स आपको हेल्प कर सकते हैं उनको एक्सप्लेन करने में? Yes sir, definitely sir. Visuals ज़्यादा Visuals. Okay. Any questions? Anyone else from the group? Sambhav, any questions? And then जो मैं theories एक हैं, बात पूछना चाहती हूँ, हम जी। लोगों को कहाँ सीमा करनी चाहिए ग्रीड और नेसेसिटी के बीच में, वो सबसे good इम्पोर्टेंट question. है। Yeah, Pardon ma'am, can you very, please? very good question. तो ये लीना जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सबको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उनकी लाइफ में व्हाट इज बेसिक नीड और वांट्स। पर कई बार क्या होता है कि जैसे लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, यू बिगिन टू फिगर आउट कि दिस इज नॉट वर्थ हैविंग वायलेंस टुवर्ड्स, कि मुझे और चाहिए, इसके लिए नॉन वायलेंस नहीं करना। तो हर आदमी, हर औरत, हर पर्सन को अपने आप लिमिट सेट करना पड़ेगी कि क्या अपना धर्म ये बोलता है कि आप चीज से अटैच मत हो, right? So attachment is part of it, but we all have to set our limit up to where we are at. नहीं, Great. जैसे मैंने ऐसे देखा है कि जैन लोग ज्यादा दान धर्म करते हैं, तो उनके पास बहुत सारा है, इसके लिए वो करते हैं। तो बहुत Right. सारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे काम में यूज करना चाहिए, ये सभी भी बातें हैं ना उसमें। ये बात सही है, but so the answer would be you can have money, but don't be attached to the money. Be willing to give it away. हाँ, Vitika, you're on mute. Vitika, you're on mute. आप दान तभी कर सकते हो जब आपका उस मनी, कमाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन दान हाथ उसी का खुला रहेगा जिसको उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगा। हमेशा हमें कहते भी हैं मुट्ठी ऐसे मत रखो, ऐसे रखो। सो इट्स ऑलवेज लाइक कि अगर हम जितना दान करेंगे उतना आगे हम उससे अटैचमेंट छूटेगा हमारा। Great. Sir, can I add something, sir? Yes, please. Yes. Yes, sir, I heard a line from a very like reputed Shravak, and he said, "Do it, but don't attach it." Yes. क्या मतलब? Do it, but don't attach it. But घर में आओ या फिर स्थानक मंदिर जा भी जाना जाओ, तो मतलब तब उसके बाद अटैच मत हो उससे, मतलब बाद में Absolutely. Great. So what I'm going to do is here we have a couple of things. जो आज का और कल का presentation है, tomorrow actually I have a flight for India. So maybe we can do both the presentations today and get through that because we have such a small group. Okay. So now we want to quickly talk about theory of life, soul, karma, and moksha, and then we'll talk about practices, and we'll finish up in about half hour. ठीक है? Okay. Yes, sir. Okay. So now theory of life, तो ये philosophy के deep जाता है, और अब जैन धर्म सब चीजों को divide करता है, living, non-living. ये बहुत fundamental, and science does the same thing. Immobile, mobile. Science does the same way of doing it. So it should be looked upon as the theory of life. Theory of soul. आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में अपन को जानने के लिए उसके गुण, the qualities of it has infinite energy, infinite bliss, knowledge and perception. So these are more details about Atma. And then the attributes, कि आत्मा को किस तरह से explain कर सकते हैं कि it is indestructible, genderless, impenetrable, ego-free, alone, so forth. कर्मा की theory क्या है? कर्मा की थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन डायग्राम से मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि अपन अगर ये बॉडी है, ये आत्मा है और ये कर्मा के पार्टिकल्स हैं, तो अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आत्मा, कर्म और बॉडी एक आत्मा से कैसे इंटरैक्ट करते हैं।
Imagine these as positive and negative karmas. So very quickly, कर्म कैसे आते हैं, इन्फ्लक्स कैसे होता है, आश्रव क्या होता है, मन वचन काय से आत्मा में कर्म आते हैं, और फिर वो कर्म बनते कैसे हैं, आप किस तरह से कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ वर्सेस अगर आप forgiveness, modesty, straightforward generosity, you have a choice. You can go one or the other. And then intensity, अपन बोलते हैं कि आप पानी में लकीर खींचना versus पत्थर में लकीर खींचना. You have different ways, being a little upset or being enraged. That then creates different karmas. And it creates this cycle where bonding of karma inflow हो रहा है, intensity add होती है, intention add होता है, and then bind होते हैं, और कर्म निकलते भी हैं अलग अलग तरह से. And this is the whole cycle of karma. So Nimit and Purshat play a major effort in creating the situation in a given karma. उस situation में आप choice create करते हैं, उस choice से आप reflect करते हैं, you in your मन वचन काय, and then that leads to another situation, और फिर उस situation में choice होती है, और फिर उस choice से और कर्म आते हैं. So this is the cycle, the theory of karma. Lots of details, but we quickly go through that. तत्वार सूत्र में भी लिखा हुआ है कि मोक्षा क्या है. Journey to moksha is every way it's difficult. रोज अपन मोक्ष के सोच नहीं सकते, पर अपन happiness के बारे में, equanimity and all that. First, do no harm. Then be happy every day. Find equanimity and then work for moksha. So that is there. So we have a worksheet हम आपसे share करेंगे that we can share with you as well. And what is happiness is another major conversation we can have later, but I want to go to Vitika and talk about practices in a second. So happiness is, if you know, apan pehle Maslow's hierarchy of needs, health, but we have to think of it differently as health, affection, security, purpose, but ultimately apna dharma bolta hai equanimity, shamta bhav rakhna. Health, diet, exercise, ye health hai. Affection, emotional well-being, physical well-being hoti hai health, but emotional well-being also. Security, financial security, physical security, relationship security. Significance, having a purpose and a meaning. Equanimity, contentment, peacefulness and harmony. Hasi, easy way to remember ki what is happiness is hasi, health, affection, security, significance, equanimity. And then we can look at happiness in different ways. Agar present happiness ki joy or pleasure, अपन chocolate खाते हैं, रोज को smell करते हैं, present happiness. Lasting happiness अपना धर्म बोलता है equity, equanimity, and the meditation experience. Eternal happiness, nirvana, moksha. And so that gives us a sense of what is happiness as well as what are the paths to happiness. So in brief, that is what Jain path talks about, and that is there. So questions, and then we go to some of the practices, and then we can finish up. Shreyansh, what do you think? Is this something that young people would enjoy? I think Shreyansh has left because he had to go. He has somewhere. left now. Yeah. Oh, yeah, I think he's Deena ji, do you think young people would enjoy some of this? एक्चुअली मैंने बहुत ट्राई किया, 30-40 लोगों को ऐड किया, बार-बार मैसेज करती रही, पर पता नहीं कुछ उनके अलग कुछ काम हो Sure. गया. No, that's Not okay, a but problem. That's okay. not a problem. That's okay, but this is just a pilot. We're looking at if the youth would be interested in there. So what I'm going to do is let us now. I'll do this. I'll show the second presentation, and then we can finish up. And this goes into the practices part. So our day-to-day
we have to now take these values जो अपने principles हैं, अब इनको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे. तो वितिका, let's quickly go through the practices. Okay, so here first is ahimsa practices. Ahimsa mein we have taken vegetarianism, forgiveness, compassion, services, yoga, carefulness, intoxicant free, stress free. That is, सबसे पहले आता है vegetarian. हमें vegetarian diet क्यों लेनी चाहिए? उसका because there are many things in that. First, to reduce the risk. हमारे पास हमें mentally, physically दोनों तरीके से देखा जाए तो vegetarian diet हमारे लिए बहुत जरूरी है. Say for example, अगर कोई एक छोटा बच्चा है, वो अपने पापा को बोलता है, पापा मुझे तो मेरे फ्रेंड्स मीट खा रहे हैं इसलिए मुझे भी मीट खाना है. पापा says no, it's not a good thing. But no, पापा, the child says नहीं पापा मुझे तो खाना ही है, कुछ भी करो मुझे तो खाना है. पापा बोलते हैं okay fine, give me a hand, let me cut your finger and then I'll fry it and give it to you. That is also meat. बोले नहीं पापा मुझे दर्द होगा. So, अगर तुम्हें दर्द होगा तो एक जीव है, दूसरा जानवर है, उसको भी तो दर्द होगा. So, animals are not for food. उनको भी दर्द होता है, इसलिए vegetarianism मतलब animals के ऊपर भी जीव दया करना बहुत जरूरी है. So this is a very nice example of how one should be looking at violence and ahimsa. But the second practice of ahimsa is forgiveness. Forgiveness. उसमें क्या, कोई भी अगर कोई दो दोस्त हो या कोई भाई, आज फैमिलीज हैं, कई बार होता है झगड़ों में, बड़ी बड़ी फैमिलीज, दो भाइयों के झगड़े या दो फैमिली में कोई दो फीमेल्स के झगड़े, फैमिली डिस्प्यूट हो जाती है. अगर कोई भी, अगर एक दूसरे को हम फॉरगिव कर देंगे, हम दूसरे को माफ कर देंगे, तो उससे फैमिलीज भी डिस्प्यूट नहीं रहेंगे और फैमिली साथ रह पाएगी. चाहे फ्रेंड्स हो, आज बहुत जल्दी इजीली फ्रेंड्स भी होते हैं, फ्रेंड्स में जल्दी से दोस्ती टूट जाती है जल्दी से. तो ये सब क्यों? बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू फॉरगिव देम. हमें खुद भी क्षमा मांगना या क्षमा देना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. क्षमा मांगने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए और क्षमा देने में भी. इट मे लीड्स फ्रेंड्स, मतलब एनिमीज को भी हम फ्रेंड्स बना सकते हैं. Right. So forgiveness leads to that. Okay. And then the next practice is practice of compassion, love for others. दूसरों को प्यार करो, दूसरों के बारे में सोचो. कंपैशन मतलब सिर्फ किसी की सिंपैथी करना या किसी पे दया करना, ऐसे नहीं. मन से, दिल से किसी के बारे में सही सोचना, अच्छा सोचना. That is what compassion is. किसी की सफरिंग को समझना. Right. And so these are all in our scriptures, and there's very interesting. Compassion क्या होता है? अपन दूसरे words use करते हैं, pity use करते हैं, sympathy, empathy. Pity मतलब you feel sorry for someone, but it's okay. Sympathy is that you feel sorry, but it's deeper. Empathy is that you feel it inside yourself. Compassion is even stronger. A very small example for this is कि अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हम देख के बुरा लगता है, लेकिन कितने लोग हम उनमें से हेल्प करने जा पाते हैं. Right. So that is what compassion is. Real helping them. Right. And the next service, it is related to compassion only. Live and help live. It can and be souls done. render services to one another, comes from Tattvatra Sutra. Parasper groho jeevanam. Yeah. तो इन सब के हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं क्या? हम लाइक अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस इज योगा एंड एक्सरसाइज. सो योगा एंड एक्सरसाइज से हमारी माइंड, बॉडी और स्पीच, ये सब जो है शांत होता है. और जब हमारा मन शांत रहता है, हम शांत रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है. सो फॉर इनर पीस, इनर काम, इट हेल्प्स इन एंजाइटी. बच्चों को पढ़ाई के दिनों में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू रीड. जस्ट थिंक. मतलब सिर्फ हमारा जैनिज्म हमें ये सिखाता है कि व्हाट यू वांट टू डू, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट, मेडिटेट इट. Then is practice of carefulness. Carefulness is
राइट, कि हम किसी से कुछ बोलने में, किसी के लिए कुछ करने में भी सोच के करें. हमें नहीं पता किस चीज से किसको बुरा लग जाए. So we should be very thoughtful in our speech, in our actions and other things. उससे हमारा एक good moral conduct create होता है. Business में देखा जाए तो सबको पता है, think before you speak, सब कहते भी हैं, think before you act. Just because of this reason कि हम बिना सोचे समझे किया गया कार्य, वो एक कहावत है ना, अब पछतात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. So you should first think what you are doing, बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा. Great. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस ऑफ इंटॉक्सिकेंट फ्री. यंग चिल्ड्रन में या हम किसी में भी आजकल बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशली ड्रग्स है, ड्रिंक्स हैं, ये सब बहुत, सिगरेट है, स्मोकिंग है, ये सब बहुत कॉमन होता जा रहा है. इन सब का सबसे इम्पोर्टेंट उनको समझना ये है कि हाउ दे आर हार्मिंग आवर लाइफ, आवर सेल्स. बिकॉज हम एक बार हम स्मोक कर, उससे हमारा माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है. और जब हमारा माइंड हमारे ही हाथ में है, वी डोंट नो, जब ड्रिंक करने के बाद हमें नहीं पता हमारा एक्शन क्या है, हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं. तो जब हमारे सेंसेस ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो हमें पता ही नहीं कि हम क्या करेंगे. सो दैट इज द नॉन वायलेंस टुवर्ड्स आवर ओन बॉडी एंड माइंड. सो अवॉइड अल्कोहल. उससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, लिवर प्रॉब्लम, लिवर कैंसर्स होते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, स्मोकिंग से लंग कैंसर्स होते हैं. सो ये सब अवॉइड करना भी हमारी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए. देन लिविंग स्ट्रेस फ्री. स्ट्रेस फ्री क्यों? अगर हम स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे तो हम ढंग से, स्ट्रेस होता क्या है, किसी भी चीज का, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऐसी फीलिंग जिससे एक हमारा दिमाग में मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा. किस चीज से होता है? ओवरवर्क से होता है, या मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, सेल्फ क्रिटिसिज्म, आई कैन नॉट डू दिस, नेगेटिव थॉट्स कि उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मेरा क्या होगा, मैं आगे कैसे करूंगा. Just believe on one line, whatever is going to happen, it will happen for a great thing. जो होना है बहुत अच्छे के लिए होना है. तो if we think this thing, then we will be able to remain stress free. हम Jainism just teach us this thing only, कि जो होना है अच्छे के लिए होना है. So don't be stress free. So this is the way how Jaywall can help overcoming stress and anger. अहिंसा, ध्यान, अनेकांतवाद, क्षमा से, डाइट, मान, ईगो. So very nicely what Vitika you've shown is all of the different practices. So I want to ask Leena ji, just तो ये अपन अगर जैन धर्म से देखते हैं कि क्या क्या practices आती हैं from ahimsa, do you think that this summarizes well? ये अपन कोई missing आ रहे हैं, कुछ add, आप क्या add करोगे इनमें? अहिंसा, योगा, प्रैक्टिस जो जैन धर्म में अपन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अभी दूसरी प्रैक्टिसेस अपन देखेंगे, बट वेजिटेरियन डाइट है, फॉरगिवनेस है, दिस समराइजेस प्रीटी वेल लॉट ऑफ द अहिंसा प्रैक्टिसेस. मेरे ख्याल से ये सब आ ही गया है, सर्विस है, कंपैशन है, ये सब आ गया हाँ है. ये सब आ गया ज्यादातर. ठीक है, अब अपन ऐड करते हैं, नाउ वी गो इनटू अनेकांतवाद. अनेकांतवाद से भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस आती हैं, थोड़े अपन को हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड दैट. सो वितिका, quickly let's go through अनेकांतवाद practices. Okay, now अनेकांतवाद practices से open mindedness, जैसे मैंने पहले भी बताया था, माइंड में हमें दूसरों के व्यूज को रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड को बहुत खुले विचार का बनना पड़ेगा. पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कई बार बोल देते हैं कि पापा, और एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट होता है एक फादर और सन में, तो सन, पापा किसी बात पे अगर अपने बेटे को रोक रहे हैं तो ही इज राइट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बेटा बोलता है कि नहीं पापा आपको क्या पता, मेरे को मेरे फ्रेंड्स के बीच में जाना है, मेरे फ्रेंड्स सब बेटा अपनी जगह सही है. तो अनेकांत, हमें अगर ओपन माइंडेडनेस से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ बेटा ठीक है. फादर को भी इतना होना चाहिए कि ठीक है, इफ यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स, दिस शुड बी अ टाइम लिमिट, आप तब तक आ जाना. और बेटे को भी, ओके फादर, पापा यू आर ओके,
मैं आपने मुझे इतना समझा है, I'll understand and I'll come accordingly. So this is what open-minded is, जो सब एज ग्रुप्स में होनी चाहिए. Then is meditation and mindfulness. Meditation and mindfulness is also related in कि हम कितने शांति से और कितने मतलब रेस्ट रहकर हम आगे बढ़ सकते हैं कोई भी चीज के बारे में. हम जितना सोचेंगे, जितना गहन करेंगे, आज पढ़ाई के लिए भी अगर हम सोचेंगे कि नहीं मुझे ये चीज करनी ही है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. इफ बार बार हैमर करने से कोई भी चीज से हम हैमरिंग करते तो वो चीज होती ही है. तो सिमिलरली इफ वाइल डूइंग एग्जाम टाइम में भी घबराने से अच्छा नो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. इफ आई डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन डेफिनेटली आप उसी को मेडिटेशन कहते हैं. हम माला भी रहते हैं, रिपीटेटिवली एक ही चीज बोलते हैं उसमें भी. So one of the things that comes also is this whole idea of self-reflection. अगर अपन silence में नहीं बैठते हैं, अपन time नहीं देते हैं, तो you remember when we talked about transformation, all the transformations, without self-reflection and self-awareness, which meditation brings. Meditation, self-reflection, self-awareness लाता है. If you don't do that, transformation cannot happen. In day-to-day work, ठीक है, you have to do what you have to do, but you have to have time for that meditation. Great. And then quickly through the other ones. Respect is जितना हम सामने वाले को respect, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी casteism कुछ भी हो, जितना हम देंगे उतना ही हमें मिलेगा. This is what respect teaches us. Humility, सबके लिए मन में प्यार, सबके लिए, this is we should have humility for everyone. Then straightforwardness, this we have already done कि कैसे straightforward हमको होना चाहिए. Scripture reading क्यों करनी चाहिए? There is one basic reason is कि उससे हमें हमारे विचार बदलते हैं, हमें चीजें पता, नॉलेज मिलता है. जब तक हमें नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक हम अपने अंदर चेंज कैसे लाएंगे? चीजों के बारे में जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा. दैट इज व्हाई स्क्रिप्चर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन इज इक्विटी. इसीलिए बोला है पढ़वम नानम तवोदया, इसके लिए बोला. हाँ. पहले उसके बाद में हम लोग को समझ में आएगा ना क्या करना है क्या नहीं. जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम एक्शन में उसको ला ही नहीं सकेंगे. Then is equity जैसे अभी हमने पहले भी देखा था. Equity is सबको एक समान रखना उसकी जरूरतों के हिसाब से. That is what equity is. Then is prayer and puja. ये भी हमारे सेल्फ के लिए होती है कि उससे हमको ध्यान लगाने में क्षमता मिलती है. Rituals को समझना रहता है. So we can go through quickly the practice of open-mindedness. ये कहाँ से आती है? तो अगर अपन तत्वा सूत्र 5.31 देखेंगे तो it denies the existence of absolute non-existence, absolute permanence. So जो absolutism है वो पूरा deny होता है. And this helps us into better be open-minded, gain insight and so forth. Now, look at people from different religions, right? So we have to make sure that I am so happy to know that all of our different religions, I was raised in the only one that holds the real truth. What Jain Dharma bol raha hai ki that you have to look at all. Yes, apan dharma follow kar rahe hain apna, but we have to respect every other religion. Apan ne meditation or mindfulness se baatein kari. Concentration through single object and having is meditation. Sutra 9.27. And science, as a doctor, I can tell you, reduces anxiety, depression, stress, and improves our productivity, emotional well-being. So lots of benefits from meditation. It's a whole process that distractedness can reach to open-mindedness and mental. And we've done lots of work on that as well. Respect and gratitude. Whole idea in Tattva Sutra 9.2, reverence means respect learning others. And also 9.23 talks about enlightening and good conduct in senior ascetics. How we can improve our respect and gratitude. And gratitude changes our brain. We can look at our happy chemicals, and chemicals that will make us happy is dopamine, serotonin, all of these things
are when we do gratitude, they happen. Humility, same thing. Very अपन 10 धर्म जो होते हैं उनमें से morality is perfect, forgiveness, humility, straightforwardness, and so forth. These are practices, are day-to-day things that we need to do according. Straightforwardness, same thing. Different practices is like spiritual reading, not just our scriptures, but other scriptures to get a better idea. And we know that makes a difference. And equity, understanding that we have to be fair towards all views, all perspectives, and others. And then also doing the rituals. The practice of rituals are important because they help us on the path to spirituality. And now, and last one, Ritika, help us see the aparigraha practices. Aparigraha se, to ye sab 24 practice, 24 practices, these are the last 8 that relate to aparigraha. First is balancing needs and wants. ये अभी हमने समझा था कि हमारी नीड्स और वांट्स जो हैं उनको हमें बैलेंस करते आना चाहिए. कोई भी अगर हम छोटे घर में रह सकते तो हमें बहुत बड़े बड़े घरों की क्या जरूरत है. हम 2 गाड़ियों से काम चला सकते हैं तो हमको 4 गाड़ियों की क्या जरूरत है. ये जो जरूरत है वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. इससे हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ेगा और हमारे सेल्फ लिविंग पे भी बहुत फर्क पड़ेगा. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली बैलेंसिंग नीड्स एंड वांट्स सेज. Then is contentment. Contentment is, excuse me, so having a sense of satisfaction with what one has. If we continue to live a life where one is always saying, I am not happy, then that is what a parigraha can teach us, that there is, be content with what you have. You not really necessary to begin to be unsatisfied in life. Okay, go ahead. Then is fasting. Fasting is like, say, nowadays people are saying intermittent fasting करनी चाहिए. What exactly is intermittent fasting? ये जैनिज्म शुरू से बताता है कि सूर्यास्त से पहले खा लीजिए. तो सूर्यास्त से पहले अगर हम खा लेंगे तो सुबह तक इट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग. दिस इज व्हाट जैनिज्म इज सेइंग ऑल अबाउट. जिस तरह से हमारे बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है रात को हम सोने के लिए, उसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट चाहिए होता है. तो फॉर दैट फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट ओवरऑल. देन इज ऑस्टेरिटीज. तब हमारी ऑस्टेरिटीज इज कि हमको अपनी लाइफ में किस चीज, कितना ध्यान और किस चीजों को त्याग कर कैसे अपने आप को तप करना चाहिए. देन इज कंट्रोलिंग सेंसुअल डिजायर्स. सिर्फ अपनी नॉर्मल डिजायर्स को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, सेंसुअल डिजायर्स को भी कंट्रोल करना जरूरी होता है. देन इज आर्ट ऑफ डाइंग. आर्ट ऑफ, इसे हम संलेखना भी कहते हैं. उसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल छोटा सा है कि जिस तरह से किसी भी एक अपन अगर जिस तरह से हमें जो लाइफ मिली है, वी नो कि बहुत सारी गतियां होती हैं. हमें आज ये मनुष्य गति मिली है, आज हमको मनुष्य जीवन मिला है. वी शुड बी हैप्पी ऑफ दैट. और जिस तरह से हमें मनुष्य जीवन को हम एंजॉय कर रहे हैं हैप्पीली, तो हमारी डेथ को भी हमें उतनी अच्छे से ही सारे मोह को छोड़ के उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए. दिस इज व्हाट आर्ट ऑफ डाइंग इज. हंसते हुए अपने आप को डेथ को एक्सेप्ट करना. देन इज चैरिटी. चैरिटी इज कि हमें दान क्यों करना चाहिए. अभी अपनी बात हुई थी दान के ऊपर ही कि दान करने से जितना हम दान करने से हमारे उनसे मोह छूटता है. तो दान करने से आगे भी बहुत दूसरों को भी हेल्प मिलती है. हम मंदिरों में भी दान करते हैं ताकि हमारे मंदिर और हमारी और प्रोस्पेरिटी बढ़े. देन एनवायरमेंटलिज्म. किस तरह से हम एनवायरमेंट को अपने हेल्प कर सकते हैं. That is what, by avoiding wastage, by controlling pollution, जितना ज़्यादा cycling use करके, petrol कम use करके, these are what environmentalism can do. Water wastage of water reduce करके, this is what environmentalism is. So these are all practices from aparigraha, and what we want to do is to then all of them come from the scriptures.
balancing needs and wants kahan se aata hai? Sutra 9.26 talks about renunciation, and it is meaning that your basic needs we know is there, but then there's wants. We want to be able to materially distinguish. अपन को difference मालूम, हर जने के लिए अलग अलग होगा. ये क्या benefit होता है? It reduces our greed. Contentment से क्या होता है? We are able to calm the mind and less agitation, and it brings inner peace, reduces anxiety. Fasting it reduces blood sugars, it helps your benefits as well. And actually there is something also, whole new concept of digital fasting. Yes. So nowadays we have become so addicted to our devices that people are saying that we should be thinking about digital fasting. Right? So that the whole idea. Leena ji, do you know what I mean by digital fasting? Okay. So austerities. You're mute. Sorry. Go ahead. सुबह से मोबाइल हाथ में आ जाता है सबके. पहले चेक करेंगे मैसेजेस, रात को 12 बजे तो वो चलता रहता है. संभव आप भी वही करते हो क्या? पूरे दिन मोबाइल चेक करते रहते हो? हाँ सर, कॉलेज के अलावा तो चलता ही रहता है. चलता ही रहता है. I know. तो digital fasting is limiting the use. और actually अपने शास्त्र में लिखा हुआ है कि you should limit the use of consumables and non-consumables. So austerities is doing austerity. It rewires our brain. It is okay to not be excessive with our. And then we talk about sensual desires. We talk about Uttam Brahmacharya as a way. It is healthy relationships in a family, in society, and it is mental control as well. Understanding Salekhana. Yeah, it is a way of process of how one dies, and to be accepting of that. And then giving charity, it strengthens oneself and others around them. And certainly environmentalism, we talk about climate change and the problems with the climate change. And so all of those are made. And again, why are 24 practices? Why are we talking about 20? Kyunki wo apan ko, they will make us happiness, present happiness, yes, joy and pleasure, also lasting happiness, equanimity, meditation, spiritual, and eternal happiness. And so once we do these practices, which are ahimsa, anekantvad, aparigraha, we then practice and we achieve further happiness. And all of this we put in a simple diagram that people can come and then look at. So with that, I want to finish up and thank everyone for joining. This is just sharing some of the things, and maybe Vitika, if you want to do Namokar Mantra, and then we can finish off. Yeah, sure. Sir. Namo Arihantadam, Namo Siddhadam, Namo Ayariyadam, Namo Vajayadam, Namo Loe Savasahudam, Eso Panch Namokaro, Sava Pavapanasano, Mangladam Cha Savesim, Padamam Havai Mangalam. Om Shanti Shanti. Great. Thank you so much. Thank you, Leena ji. Sir, it was great joining with all of you, and all your valuable efforts and valuable time was worth it. And I hope we will meeting again soon. Sure. I'm actually there next Tuesday, Saturday. I'm with Dr. Firodia. We'll be at the hostel, also coming over there. And we can somehow we can meet and talk to people. Yeah, sir. Great. Great to meet you, sir. All right.
Thank you, Leena ji. Thank you, Leena ji. Thank you. Okay. Thank Bye. you. Take care. चलो, bye bye. Okay. Sir, I am also from Ratlam. सर गए. Bye.